Assalamualaikum everyone and warm welcome to all of you to the session. I hope you all are well and must be doing great. So my dear students, without further delay, let's begin. So हमारी आज की क्लास फोकस करती है ऑन shadowing. This is Grammarly's AI writing app. Your writing from start to finish, all in one place. Hello, lovely students, and welcome back. Okay, so first of all तो मैं आप सबके mic unmute करना चाहती हूँ. जी, क्या आप अपने mic unmute कर सकते हैं? Try to tap on your mic, everyone. Yes, okay. तो सबसे पहले तो मुझे बताइए अपने चाइल्डहुड फेयर के बारे में in English. Something that you are afraid of since childhood. Everyone, one by one, you will speak. हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, मैं आपके नेम बोलूँगी और आप खुद अपना माइक ओपन करके मुझे आंसर करेंगे. Everyone raise your hands. जूम की एक्सप्रेशंस में जाएं, रिएक्शंस में सॉरी, और वहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें. हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस. सो वन बाय वन आप लोग अपना माइक अनम्यूट करेंगे एंड यू विल टेल मी अबाउट योर फेयर्स, थिंग्स which you are afraid of since childhood. So firstly we have Xiaomi. Xiaomi बताइए. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम. I afraid of aeroplane since my childhood. mm, I have Airplane or fly? aerophobia. Okay, so you cannot fly. Since my childhood, I most fear from aeroplanes, not jet planes. I like jet planes. I can't uh, uh, see the aeroplanes when they fly. Mm-hmm. I But you feel like fly. they fall over me. They will So fall over you. Okay, okay, okay. yeah. That is interesting. Okay, thank you very much for sharing your fear with me. Okay, the next participant, raise your hand, please. One by one, everyone will speak. जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट इस एक्टिविटी को करने के लिए. मैं यहाँ पे टाइमर भी ऐड कर रही हूँ. सो ऑनलाइन टाइमर हम अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी लेक्चर की टाइमिंग भी साथ साथ ही डिस्टर्ब ना हो. सो 5 मिनट के अंदर जो लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे. रिफत, अनम्यूट योर माइक. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. जल्दी से, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? Ma'am, there is a list of my fears. I was afraid of dark, fear of the dark. I was afraid of being alone, very insecure without parents or caregivers nearby. Still, I Okay, feel the present one. Yeah, fear of loud noises. Ooh. I was afraid of strangers a lot. I was afraid of animals, lizards, cockroaches. Still, I'm afraid of lizards. Fear of imaginary creatures, like a monster will come from somewhere, from under the bed. A hand will come and hold me. Okay, right. Fear of heights as well. Still, I am afraid of heights. One interesting thing that I want to share with my class, it is the fear of injection. Oh, so you're afraid of injections also? Yes. I was afraid Okay. of Still, injections. are you Still, I still am afraid afraid of of them? injection. Yeah. Okay. Fine. And that's it? Yeah. Okay. Thank you very much, Rifat. Thank you. Servish.
योर टर्न नाउ सैरिश। मैंने म्यूट, आपको पता है रिफत, बिकॉज ऑफ यू मैंने पॉज कर दिया था सो दैट अदर पीपल कैन स्पीक ऑल्सो। Because the list of fears, na? All right. Thank you very much, Rifat. Sarish, your turn. Assalamualaikum. Walaikum assalam. What are you afraid of? Ma'am, I am afraid of darkness and aloneness and injection. Almost. And injections also. So you are somehow connected with Rifat in this regard. Okay, thank you. Are you still afraid of all these things? Yes, Yes. Hina. Hina, किस चीज से डर लगता है आपको? Tell me, hurry up. hi, Assalamualaikum. Walaikum assalam. I'm scared of being lonely. I've lost my parents and I've lost my eldest brother. So I'm married. I do have a daughter. But sometimes you miss the attachment. So I'm scared to be emotionally unloved sometimes. I'm scared to lose an attachment. So I'm scared of those bonding, losing the strong bond. How did you lose them? When did you lose them? I lose, like in a sense that they passed away. So in 2014, my mother passed away. In 2017, my eldest brother he got murdered, and then in the same, my father then passed away. Hmm. Okay. I'm so sorry to hear all these things. Allah sabar de aapko. Thank you so much. You're most welcome. Okay, the next participant. What are you afraid of? Today our topic is a little bit of personal, of course. So I want you to share your fears with me. Unmute your mic, please. अगर आप hand raise नहीं कर पा रहे, still just unmute your mic and let me know. Redmi 12C, yes. What are you afraid of? I can't hear you. Hmm. नहीं, I can't hear you. Sorry. Ma'am, yes. Am I audible to you? Yes, now I can hear you. So what are you afraid of? Yes, ma'am. I am afraid of height like acrophobia and also darkness and gamophobia like marriage. And I am scared to lose my loved ones. Scared to lose your loved ones. Scared to Yes. lose my loved ones. ठीक है. That's Yes. nice. Thank you for sharing it with me. Thank you. In the next class, I will ask you people that if you could remove all these scares, what would you do? So step by step, you will tell me कि लेट्स सपोज मुझे वो तमाम फेयर्स हैं जो आपको हैं, तो आप उनको कैसे, मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे अपने फेयर्स को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग मेरे थेरेपिस्ट बनेंगे, ठीक है? सो आई एम गोना शेयर द ट्रॉमास विद यू, द फेयर्स विद यू, एंड you guys will give me the practices I can do to become a better person. ठीक है? So we still have, oops, मैंने फिर से pause कर दिया था. Okay, we have 1 more minute. If anyone else would like to come and tell about their fairs, you're more than welcome to do so. Assalamualaikum, ma'am. Hello. Walaikum assalam. Yes, what are you afraid of? I am afraid of acrophobia, height phobia, and fear of darkness. Okay.
but I have overcome these fears now. You have overcome all these fears now. All Yes, right. That's to nice. some extent. To some extent, of course. Yeah. Okay. Thank you, Sajal. But Ma'am, be listen, ready to please. become Pi therapist in the next class. Ji, Sajal. Okay. Mm-hmm. Ma'am, I want to say something. I've just received the message on WhatsApp that you have complained about me that I am not doing the task or not attending the classes. Mm-hmm. So they are removing me from WhatsApp group. Okay. But That's ma'am, very, thank you very much. Okay, let me tell you what it is. okay, Basically, in all your badges, okay, before you guys are about to like finish the course, they ask you to have a check, have review your all assignments, ठीक है? So ये by default सबको मैसेज जाता है. आप 500 बच्चे मेरे पास, तो आप 500 बच्चों को ये सब मैसेज जाएगा. उसमें से 40% ऐसे लोग होंगे जो टाइम पे अपनी असाइनमेंट्स दे रहे हैं, बाकी वो सब बच्चे होंगे जो शायद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पेंडिंग जा रही है, तो सबको जाता है. सो जो नहीं कर रहे असाइनमेंट, वो बस उनको खबरदार हो जाएं वो, और जो कर चुके हैं वो उस चीज़ को इग्नोर कर दें. दैट्स इट. ठीक है? oh, परेशान नहीं sure, होना. okay. थैंक यू. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज. वी हैव ओनली 1 minute 44 seconds. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. What are you afraid of? Mm, I'm trying to remember what I was afraid of when I was a child, but I couldn't remember anything like I could afraid of. But now I have a larger list that I'm afraid of little insects. I shout out loud when I saw them, when I saw cockroach, mouse, lizard, like that. But I was crazily brave when I was a child. Nothing else. So tell me again, the one thing you're very much afraid of is? There are a lot of things like insects. Insects. So basically the Yeah, reptiles, they scare you off. Is that so? yeah, but it's happening now when in this age, like in childhood I was not afraid of them, but Hmm. now I don't know why it happens to me, but But now now you I'm are. afraid of. Yeah, So suddenly, you know what happens is in human life, after every 7 years, things they kind of get reversed. So things which you don't like, you dislike them, you start liking them. Things that you haven't had, like feelings you haven't had, they start to occupy your personality. So ऐसा होता है, हर 7 साल के बाद ऐसा होता है. So don't worry about it. You will get better, inshallah. And the inshallah. time is up. Thank you. Is there anyone else who wish to come? Is there anyone else who wish to come and tell me about their affairs? मैं आपको 1 minute और दे सकती हूँ और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम मैम my the I'm mostly afraid of the day on which my result came. I Hmm. thought the papers are too much good, but after still being mostly I I mostly performed too much well in my exams, but still fear is being. But you are still scared of exam days, your result days. Yes, ma'am. Hmm. कोई बात नहीं. You will get better, inshallah. How old are you? In which class do you read? Ma'am, I'm pursuing my BS in English. Oh 17 my years old. goodness. Oh my goodness. You're in your BS? I thought you are in your intermediate or maybe in your 8th or 9th class. You sound like a small kid. Okay. So after your BS, inshallah, when you will come in your professional life, you will stop receiving or feeling such kind of fears. This is something I promise you. Inshallah. Thank you, Okay. ma'am. You're most welcome. Thank you. Okay. Anyone else? Fawzia Jamil or Hajra Ali? Hurry up.
Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Jaldi se, what are you afraid of? Ma'am, I am afraid of lizards since my childhood, and my sister Okay. also. Or both of you are afraid of lizards. So if a lizard attacks both of you in the same room, what would you both do? Start screaming? Yes, and calling my mom. And you start mom for help. Yeah, that's what we Yes, always call mom for help. Okay, thank yes. you very much, Fozia. Now Hajra. Hurry up, Hajra. Unmute your mic, Numan, Hajra, कोई भी एक जल्दी से. Assalamualaikum. Walaikum assalam. What are you afraid of, Numan? Ma'am, I am afraid of a little bit every project when I was try well prepared, a little bit afraid, attention before the presentation and getting things ready. You get cold feet before the Mm, presentation, is it so? No, ma'am, cold feet nahi, little bit feel something is missing. Oh, that you're not well prepared. No, being Like आपको लगता है कि maybe कुछ ऐसा है जो अभी तक मैंने prepare नहीं किया. I think mm, it's not about the topic and not about the presentation. It's self communication and self confidence. I think feel it. Oh, it's that. Okay, you know what you can do to overcome this fear? Every day, start in front of the mirror and talk to yourself. So once you start facing yourself now, you will stop becoming afraid while facing anyone in your life. And दूसरी trick मैं आपको दूँ, when you're standing on a rostrum or when you're standing on a stage, don't look at people. उनके जो सर है ना उससे थोड़ा सा ऊपर को देखें. राइट लगेगा कि आप लोगों को देख रहे हैं लेकिन आप उनको नहीं देख रहे, आप ऊपर खला में देख रहे हैं, हवा में देख रहे हैं. So this can Yes. also make you composed. Okay, so that's something. ठीक. Do try it and let me know if it works, because it has Thanks. always worked with people who have same fears like. Okay, let me know. Thanks. Thank Thanks. you. Hajra, unmute your mic, please. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Hajra, what are you afraid of? Ma'am, I am acrophobic and I'm afraid of heights. Hmm. So, So you're afraid of heights. yes. Okay. So you gotta go to heights to become fearless, I guess. Yeah, I think so. Yeah, you gotta face your fear someday. To overcome the fear, I think I should You should go uh, for hiking or something. go at heighted places, or Yeah. rather sit on a what is it called? Mountain or a cliff or a chairlift, maybe? Yeah, a chairlift. Yeah, A I think I chairlift. should sit on a chairlift to overcome that fear. Yes, you should. But do ask people if this chairlift is like good enough to handle you, because I don't know. It's Have you Pakistan, been? you know. Yeah. Yes, Unpredictable. Things are unpredictable here. yes, Anyhow, sure. thank you very much, Hajra, for sharing your fears with me. So everyone, आज की एक्टिविटी आप सबने कंप्लीट की. अब दो चीज़ें हैं जो हमने करनी है नेक्स्ट क्लास में. Number one is that be prepared. You all going to be my therapist, and I'm going to pose some questions, my fears or maybe my confusions, and आप सबको मुझे suggestions देना है, ठीक है? So you have to be prepared to use conditional modal verbs, ठीक है? जो modal verbs होते हैं उनको आपने रिवाइज करके आना है. And secondly, make sure to give me short and clear answers, ठीक है? Practices also. So कुछ common चीज़ें psychology से related 2-4 videos देख लीजिएगा. Come prepared in my class. Secondly, mirroring is very important. बहुत सारे students ने आज यहाँ participate नहीं किया because they are afraid to speak. Public speaking is something they are afraid of. So मैं चाहती हूँ that you all stand in front of the mirror today and talk to yourself about getting your life organized.
talk to yourself about your goals, teach yourself any concept of physics or maths, because it really helps you gather up your confidence and activate your mind. So math का कोई भी concept उठा लीजिए, percentages, algebra, geometry, anything, और अपने आप को पढ़ाइए मिरर में खड़े होके. Have a board marker also with you. It really helps you out. ठीक है? So I want you all to do both of these things in your home and come prepare in my next class so that हम इससे related मज़ीद बात कर सकें. So mirroring की टेक्निक आप सब लोग घर पे करके आएंगे. मिररिंग को हम एक्सप्लोर भी करेंगे क्लास में. कुछ रिसोर्सेज अगर मैं शेयर कर सकी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी. विदाउट डिले लेट्स बिगिन. All working in too many अब हम disconnected शैडोइंग को tasks करने वाले हैं, लाइक इसको कंप्लीट productivity. करेंगे आज. But for the first time, there's a plan. वन मोर थिंग पीपल, अब सॉन्ग्स तो नहीं मैं रेकमेंड कर सकती. सो पोम्स लिरिक्स के साथ हम देख सकते हैं. ठीक है? लिरिक पोइट्री भी हो सकती है. ओ यस, लिरिक पोइट्री. सो पोइट्री in English, right? And it should be lyrical. I just want subtitles. Something like that. ठीक है? हमारे पास सॉन्ग्स तो होते हैं लिरिक्स में, लेकिन सॉन्ग्स मैं रिकमेंड नहीं कर सकती. मोस्ट ऑफ यू आर ओके विद इट, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट, बट दे आर वेरी गुड मेथड टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस लिरिकल पोम इन फ्रंट ऑफ यू. अब आप इसको पढ़कर बोल सकते हैं और रिदम को फॉलो कर सकते हैं. दिस इज़ वन थिंग मोर जो हम करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन. Big song with lyrics in English. And I think हमेशा translated versions चाहिए होंगे. That's a very, very good method of actually improving your spoken English. ठीक है? So I want you all कि आप लोग आज मेरे साथ कुछ resources share करें. Means आप लोगों ने घर जाना है. Of course आप लोग घर पे मौजूद हैं, लेकिन after this class all of you will go to YouTube and you will search something जो कि आप खुद पढ़ेंगे इन इंग्लिश और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर करेंगे. ठीक है? सो आई वांट यू ऑल कि कुछ भी लिरिक्स में हो सकता है. इट कैन बी अ पोइट्री, इट कैन बी अ पोम, इट कैन बी अ स्टोरी ऑल्सो. सो स्टोरी स्क्रीन पर चल रही होनी चाहिए. लिरिक्स के साथ आप सिर्फ उसको रिदम फॉलो करते हुए रीड कर रहे हैं. राइट? दिस इज़ वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. वुड यू डू इट? So let's go to documents and write down the assignments which we are going to do today in order to improve your spoken English. So ये कुछ activities हमने आज घर पर जाके करनी है. Number 1, choose a video, lyrical one, and read it to improve pronunciation. हमारी next class pronunciation पे base करती है. ठीक है? And watch videos on psychology, on the topic of psychology and social issues. So हम कुछ role play कर सकें. For role play in the class जिसमें I will be the patient and you guys will be my therapist. So you're gonna help me out.
सो रोल प्लेइंग हमारी होनी है नेक्स्ट क्लास में। पहले प्रोनाउंसिएशन पढ़ाऊंगी, देन हम रोल प्लेइंग की तरफ जाएंगे। और मैंने आप सबको क्या कहा? मिररिंग। टॉक टू योर सेल्फ टुडे। मिररिंग, जिसके थ्रू यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ प्लस टीच योर सेल्फ एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। टीच योर सेल्फ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे पूछना है कि आपने खुद को क्या पढ़ाया था एंड फिजिक्स। व्हाट आर माय फेयर्स? किसी ने पूछा ही नहीं कि मैम व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। सो नेक्स्ट क्लास में मे बी यू कैन आस्क मी. For now, I can tell you that I was afraid. As a kid, I was afraid of mathematics. I was really afraid of mathematics. And then, fortunately, I had an access to a teacher who was a brilliant teacher. And then I started loving maths. So maybe it's not the subject, it's always the teacher and the delivery of the content. Now we are going to move towards our class. Can you guys This is it, see the combining screen? everything you need. Projects, chat, and knowledge in one place. It's all powered by the world. Lyrics कैसे read करने हैं? AI. Okay, I'll You tell can you. find answers from Okay, the next part. Just listen. It's just I like am not shadowing, joking but when I rhythm tell के you साथ shadow करना है. my arms stood on end. Even Will looked a bit shaken, which is not like him at all. He called our dog Diego for company and went upstairs to investigate. Okay, a few things to point out here before we try this together. Firstly, I didn't use a contraction with I am. I am. You probably know that we almost always use contractions rather than full forms when we're speaking, especially in informal situations. But here I chose to use the full form for emphasis. I also stressed not. You also heard assimilation with the word. Okay, who wants to participate and wants to read this one paragraph? We are going to practice shadowing. So who wants to be the part of the class? Hurry up. You need to write unmute me. Okay. Shabana Zahid and Fiza. फिजा अनम्यूट कीजिए खुद को। उसके बाद शबाना, आपने अपने आप को अनम्यूट करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद निशा अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हाउ आर यू डूइंग फिजा? जी जी मैम। हाउ आर यू फाइन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? यस मैम, आई एम फाइन। हाउ आर यू? से इट अगेन। जी मैम। से इन इंग्लिश फिजा। आई एम फाइन एंड यू? एंड व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू? आस्क मी ना। जी यस मैम। हम्म। यस मैम। बेटा मुझे आपका यस नहीं सुनना, मैं सुन चुकी हूँ। आस्क मी हाउ आर यू मैम। पूरा सेंटेंस बोले। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नाउ फिजा आपने रीड करना है। आई एम आम। आई एम नहीं बोलना, आपने बोलना है आम। अलिफ को या ये जो आई है ना, आपने इसको मीम के साथ मैच करना है। सो आम नॉट जोकिंग, नॉट में टी को नहीं पढ़ना। आम नॉट जोकिंग व्हेन आई टेल यू द हेयर्स ऑन माई आर्म्स स्टूड ऑन एंड। इस एक सेंटेंस को रीड कीजिए। I am not joking when I tell you the hairs on my arms stood on end. Very good. Next, keep reading. You're doing great. Even will look a bit shaken, which is not like him at all.
Very good, very good. It means you can read, but you cannot speak. ऐसे ही है? Yes, ma'am. Okay. So I'm going to ask you some questions. ठीक है? So tell me, who was bit shaken? अभी इतना नहीं होता मुझे उसमें कोई से। बात नहीं, आप मुझे बताइए who was bit shaken. इस यहाँ से रीडिंग करके आंसर दें. मैंने इसी पैराग्राफ में से सवाल पूछा है. So who was bit shaken? No, ma'am. Will. We looked at the second. Yes. आप ट्राई नहीं कर रहे ना बेटा, फिर तो कोई मदद नहीं कर सकता फिजा. अगर आप खुद की मदद करने के लिए राजी नहीं है तो देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जो आपको हेल्प करेगा. Yes, ma'am. ठीक है? Yes. ओके. सो टेल मी अबाउट, आपने कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट की है अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए एक्टिविटी डॉक्यूमेंट में से? एनीथिंग? नो? ओके. अनम्यूट अदर पीपल. जिनको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? वालेकुम अस्सलाम. आई एम फाइन, थैंक यू. प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Moments later, Daigo came bounding down the stairs with a tennis ball in his mouth. What do you know? First. A bunch Moments of later. अब स्टार्ट करें. moments later, Daigo came bounding down the stairs. Diego. Diego came bounding down the stairs with a tennis ball in his mouth. What do you know? A bunch of tennis balls fell off the top of wardrobe and rolled down the landing. गुड, वेल डन, थैंक यू वेरी मच. ओके. सो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स को नोटिस कर रहे हैं. अब इन स्ट्रक्चर्स में क्या है? यू कैन ऑल सी Fallen. Ballsed had a weak form. Instead of saying balls had, ballsed. Okay. इन इंग्लिश व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग, अपनी फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स कर, लाइक दो साउंड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं. जैसे बॉल्स और हैड, इनको हम आपस में इस छोटे से, ये जो आपको छोटा सा अपॉस्ट्रोफी इसकी तरह नजर आ रहा है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया. सो बॉल्स्ड, राइट? बॉल्स्ड फॉलन off the top of the wardrobe and rolled down the landing. Was you know? Okay, what do you know? What do you know? अब यहाँ पे हम कौन सी साउंड को इग्नोर कर रहे हैं? पूरा सेंटेंस बोलने की बजाय what do you know, ओ साउंड यहाँ इग्नोर हो गया, एटी इग्नोर हो गया. ठीक है? एंड देन फ्लुएंसी अचीव करने के लिए हम अक्सर औकात इन सेंटेंसेस को प्रोनाउंस नहीं करते. ठीक है? दूसरी चीज़, फ्लुएंसी अचीव करने के लिए या रिदम को बरकरार रखने के लिए आप सिर्फ नाउन को ज़ोर से पढ़ते हैं, स्ट्रेस दे के पढ़ते हैं, और प्रेपोजिशंस को, हेल्पिंग वर्ब को, प्रोनाउंस को आप ज़्यादा स्ट्रेस देकर नहीं पढ़ते. ठीक है? Moments later, Diego came bounding down the stairs with a tennis ball in his mouth. Would you know? A bunch of tennis ball had fallen off the top of the wardrobe and rolled down the landing. Now यहाँ पे क्या है? The content words and the noun are there. So आपने हर noun और content word को stress दे के पढ़ना है, and उसके साथ की जो connected prepositions होते हैं, auxiliary verbs होते हैं, आप उनको ignore कर सकते हैं. ठीक है? So fluency के लिए, pronunciation के लिए कहाँ stress देना है, कहाँ नहीं देना, आप इस एक pattern को याद रखेंगे. That's what you're looking to achieve. Let me know if you enjoyed this. Okay, so this video is now completed. It is finished.
5 linking words भी पढ़ Here लेते are हैं. 5 linking words or phrases to use in natural conversation. Use actually to give surprising information or Actually, हम actually use कर सकते हैं अपने sentences में to give what? A surprising information. to correct information. Actually, in my spare time, I'm a professional boxer. Use to be honest to give your opinion, especially if it may be insulting. To be honest, I think your hair looked better before. And use by the way to introduce a new topic. By the way, A. This A sound is what we are stressing also. A sound. इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में IPA चार्ट्स में जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने भी वाले हैं A साउंड अक्सर AY की जगह आप AI को थोड़ा सा लॉन्ग लेकर जाते हैं. सो A. By the way, I'm having a party on Saturday. अब this is ना that's a long I basically. इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस करके पढ़ते हैं in order to make your pronunciation more to sound more native like. Yeah. By the way, I'm having a party on Saturday. Are you free? And use at the end of the day when you're about to say the most important thing after you've thought about everything. Well, at the end of the day, it's my house, so I'll decide who stays. Use anyway to change the topic, return to a topic, or finish the conversation. Anyway, I've got to go. I have to edit. That's it. थोड़े से लिंकिंग वर्ड्स भी आज हमने क्लास में पढ़े. सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन. वी आर गोना फोकस ऑन some role play and we are going to ask also कि हमने mirroring में क्या पढ़ाया खुद को and how have you found this technique helpful. ठीक है. So practical sessions start हो चुके हैं. I want you all to be active. I want you all to do your assignments with honesty, with hard work so that you can make the most out of this course. IPA चार्ट में आप सबको दिखा रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में हमने इसको पढ़ना है. सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास स्क्रीनशॉट रख के सेव कर लें बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस आउट अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ साउंड्स वर्क. ठीक है. सो कैसे साउंड्स को प्रोनाउंस करना है, डिफरेंट साउंड्स के टाइप क्या हैं, हमें इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सबमिट अंडरस्टैंड करेंगे. सो आई वॉन्ट यू ऑल प्लीज़ कीप दिस सेव विद यू. इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास डाउनलोड करके रखें. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. विद दिस आई एम गोइंग टू साइन ऑफ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.